Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students of class 4. Hope you all are fine and enjoying good health. Today we are going to study English, and this is our lecture number 3, and I'm your teacher Sara Liaquat from Divisional Public School and Intermediate College, Model Town, Lahore. The topic of our today's lecture is application. आज हम application लिखना सीखेंगे. What is an application? Let us look at the contents of our today's lecture. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे What is an application? यानी application क्या होती है? How to write an application? Application कैसे लिखते हैं? And what is the pattern of writing an application? Application लिखने का तरीका क्या होता है? कैसे लिखी जाती है? What is the format of writing an application? Now let us look at the first question of our today's lecture, that what is an application? Application क्या होती है? It is a formal request to be considered for a position or to be allowed to do or have something submitted to an authority, institution or organization. यानी application एक formal request होती है, एक बाकायदा दरख्वास्त होती है जो आप किसी भी हायर अथॉरिटी को या किसी भी इदारे को, ऑर्गेनाइजेशन को आप लिखते हैं कि आपको उनसे क्या चीज़ चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल में लिख रहे हैं एप्लीकेशन और आपको छुट्टी की दरख्वास्त चाहिए, तो आप उसमें अपनी छुट्टी को, अपनी लीव को मेंशन करेंगे. और इसी तरह से और किसी और काम के लिए या किसी और वजह से आपको छुट्टी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वेडिंग सेरेमनी में आपने शिरकत करनी है, उसकी आपको दरख्वास्त लिखनी है, तो आप फिर उसको मेंशन करेंगे. Okay, now dear students, let us look at the next question, which is very important. How to write an application? यानी एप्लीकेशन कैसे लिखें और एप्लीकेशन लिखते हुए किन किन बातों को जहन में रखें. सबसे पहले we have to use a formal format. एक उसका जो तरीका है उसको ही इख्तियार करना है, उसको ही यूज़ करना है. नेक्स्ट वी हैव टू एड्रेस प्रॉपरली. प्रॉपर उसमें एड्रेस करना है, मुखातिब करना है आप जिस भी अथॉरिटी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्क्राइब आवर पर्पस. अपना पर्पस क्लियरली डिस्क्राइब करना है, उसमें क्लियर वर्ड्स में उसको बयान करना है. लास्टली वी हैव टू एक्सप्रेस आवर एप्रिसिएशन. अपने थैंकफुल और ग्रैटिट्यूड वाले वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे. और इस बात का ध्यान रहे कि आपकी एप्लीकेशन बहुत लंबी ना हो. इट शुड बी ऑफ 1 page. It should not be longer than 1 page. Now dear students, let us look at the pattern of writing an application. यानी एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या होगा, उसमें क्या क्या बातें हम लिखेंगे. सबसे पहले वी हैव टू एड्रेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल में एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले द प्रिंसिपल लिखेंगे. इन द नेक्स्ट लाइन यू विल मेंशन योर name of your school, Divisional Public School, Model Town, Lahore. Then you have to write down your subject. आप अपना subject mention करेंगे. Either you are writing for sick leave or for leave for wedding ceremony. आपने clear words में अपना subject यानी अपना purpose आप उसमें बयान कर देंगे. Then salutations में आप dear madam, dear sir लिखेंगे. उसके बाद comma ज़रूर लगाएंगे आप. और फिर आपकी मेन बॉडी आ जाएगी. मेन बॉडी में आप कंप्लीट लिखेंगे कि आपको कहाँ जाना है शादी पर और कितने दिनों की छुट्टी चाहिए. आप उसमें डेट मेंशन करेंगे कि आपको कब से लेकर कब तक की छुट्टी चाहिए. एंड देन आप क्लोजिंग करेंगे. क्लोजिंग में यू हैव टू राइट डाउन योर वर्ड्स फॉर ग्रैटिट्यूड. लाइक आप शुक्रिया कहेंगे या आप कहेंगे आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, आई शैल बी थैंकफुल. देन आप क्लोजिंग में योर्स सिंसियरली
या योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, इस तरह के वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड देन लास्टली आप अपना नेम मेंशन करेंगे और अपनी क्लास मेंशन करेंगे, या नॉर्मली स्कूल के पैटर्न में हम XYZ मेंशन करते होते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग आवर नेम. और इस बात का ध्यान रहे कि आपका जो टेक्स्ट है दैट शुड बी अलाइन टू द लेफ्ट साइड. और this is the standard format of writing an application, so we have to follow it. So dear students, here we have a sample of application for wedding ceremony. अब हम अपने पैटर्न को फॉलो करते हुए एक सैम्पल एप्लीकेशन लिखते हैं. सो फर्स्ट पार्ट में हम एड्रेस करेंगे. वी हैव एड्रेस्ड द प्रिंसिपल. In the next line we have written the name of our school, that is Divisional Public School, Model Town, Lahore. Next part में हमने subject लिखा है और subject में we have written our purpose for leave, that is leave application for wedding ceremony. Salutation में हमने respected madam लिखा है. आप respected sir भी लिख सकते हैं या dear sir भी लिख सकते हैं. Next part में we have written the main body of the application. इसमें हमने we have started from with due respect. It is stated that I have to go to Islamabad to attend the wedding ceremony of my uncle. यानी हमने application लिखी है कि हमें इस्लामाबाद जाना है अपने अंकल की शादी में शिरकत करने के लिए. So I am unable to attend the school. यानी अब मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता. Kindly grant me leave for 3 days, dated from 26th to 28th of January 2021. यानी मुझे 26 से लेकर 28 जनवरी तक की छुट्टी अनायत फरमाएं. अब क्लोजिंग में हमने लिखा है I shall be obliged, यानी मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा, और I shall be thankful. Then we have written yours obediently, यानी आपका ताबेदार, आपका फरमाबरदार. Instead of writing our name, क्योंकि हम स्कूल के पैटर्न पर लिख रहे हैं, so we have written XYZ, और we have written the date on the right side. So dear students, hope you have understood the lecture, and if you have any problem or queries you can ask me. Thank you.